अंडरस्टैंडिंग प्रोज। अब इसको पढ़ना कैसे, हाउ गोइंग टू स्टडी प्रोज। पहले प्रोज है क्या है इसको क्लियर करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोज, अंडरस्टैंडिंग प्रोज। आई होप आपके पास, सबके पास है, जिनके पास नहीं है दे कैन गेट इट, पीछे नंबर दिया गया है। अब सर क्या हम प्रोज को डिस्कस करना है, नो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस। सिलेबस आप सबके पास है, जिनके पास नहीं है वो डेफिनेटली इग्नू की साइट जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करने कुछ क्वेश्चंस, सीरियसली कुछ क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपने कहा सर एग्जाम आ चुके हैं तो क्वेश्चंस फाइनल होने चाहिए कि यार खाली ये डिस्कस कर लें एंड देन वी विल कवर विद दैट। सर तो नोट्स का रोल क्या है, नोट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, लेकिन जिनके पास नोट्स नहीं है आप उनको क्वेश्चन तो चाहिए यहाँ से, दे नीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ गाइस, एंड दोज हु आर ऑलरेडी डेफिनेटली रेडी टू गेट नोट्स, पीछे कांटेक्ट करेंगे एंड गेट द नोट्स एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट। कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट वाइज चलना है। मतलब हमारी तैयारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेगी, एक एक चीज को क्लियर करेंगे और हर चीज को समझेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो इररिलेवेंट टू स्टोरी लाइन होंगे। यस, इररिलेवेंट टू स्टोरी लाइन, क्योंकि यहाँ प्रोज क्या है, प्रोज के कॉन्सेप्ट क्या है, उनको क्लियर करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो जरूरी है। द वेरी फर्स्ट, सर एग्जाम्पल तो आपको पता जाएगा, हाउ डज आई रिपीट, विक्रम से टर्न डिस्क्रिप्टिव प्रोज इनटू नरेटिव प्रोज। डिस्क्रिप्टिव को उसने नरेटिव में टर्न कर दिया। हाउ डज विक्रम सेठ टर्न डिस्क्रिप्टिव प्रोज इनटू नरेटिव प्रोज। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपको, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा वो साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इमीडिएटली कर लेना है। तो यहाँ आपके कोर्स का एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो इस चैनल में मिलने वाला है। जंप टू द फर्स्ट वन, how does Vikram Seth turn descriptive prose into narrative prose? Give example. Next one, what are Edmund Leach views on English formal education and what are the remedial measures he suggests? पहले तो उसने बोला भाई इंग्लिश फॉर्मल एजुकेशन क्या है और रेमेडियल मेजर्स बताया उसने। नेक्स्ट, व्हाट आर फोस्टर्स व्यूज ऑन इंग्लिश कैरेक्टर। फोस्टर के व्यूज क्या है इंग्लिश कैरेक्टर लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द नेचर एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी प्रोज। सर एक्सपोजिटरी प्रोज, व्हाट इज एक्सपोजिटरी प्रोज, अब इसको कैसे क्लियर, नैरेटिव को कैसे अलग करूंगा, डिस्क्रिप्टिव को अलग करूंगा और एक्सपोजिटरी को कैसे क्लियर करूंगा, तीनों को तीनों हमें पता होने चाहिए यार, देन वी विल गो इनटू क्लियर ऑल दैट। नोट्स की बिगनिंग में सर मैंने यही दिए। नेक्स्ट वन, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन ऑफ नैरेटिव प्रोज। सर नेचर ऑफ नैरेटिव प्रोज, यस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ नैरेटिव प्रोज। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, एच.जी. वेल्स ने वर्ड्स में ये पूरा बताया। नेक्स्ट, कमेंट अपॉन चार्ल्स डिकेंस, तेज तो नहीं हो रहा, थोड़ा धीरे बताया। कमेंट अपॉन चार्ल्स डिकेंस यूज ऑफ डिक्शन, उसने डिक्शन को यूज किया है। कमेंट अपॉन चार्ल्स डिकेंस यूज ऑफ डिक्शन एंड इमेजिनरी in the passage from the novel Bleak House, including in your course. Yes, it is your course. सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, can't help it. Write a critical appreciation of the poetic diction of Stein. Poetic diction of Stein, guys, make sure ये on tip होना चाहिए. Next, write a detailed characteristic of Gilbert Calnon, mentioning his journey from illusion to reality. The next one, this is a really good question. Write a detailed note on the key role. Write a detailed note on the key role of education in relation to society, suggested by Leach. अब अपनी वजह से जो उसने सजेस्ट किया वो मेंशन करना है। What do you know about Foster's views on character in English में, मैंने मेंशन किया था पहले भी। Next, कहता है narrate your views on use of imaginary, diction and punctuation to enhance the effectiveness of narration. मतलब नरेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम किस किस का यूज कैसे कैसे करते हैं जरूरी है। तो नरेट द व्यूज ऑन द यूज ऑफ इमेजिनरी, डिक्शन एंड पंक्चुएशन। आई होप यू गाइस डेफिनेटली गोइंग टू दिस। जंप नेक्स्ट वन, डू यू कंसीडर बिल एटकिंस ट्रैवल बाय लेसर लाइन एज अ ट्रैवलेजस, उस पर कमेंट करना है। अच्छा, अब 100% पेपर में जो क्वेश्चन आना है जहां से आना है वो डिस्कस करें, दैट इज बाइंडिंग माइंड। सर 100% क्वेश्चन आएगा बाइंडिंग माइंड का, तो हमें क्लियर करना है, वी नीड टू क्लियर इट, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो बाइंडिंग माइंड में लिख देता है, ये कंफर्म आने वाली है।
BG 105, द बाइंडिंग माइंड। गाइस मेक श्योर ये आपके ऑन टिप होनी चाहिए स्टोरी लाइन, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। द बाइंडिंग माइंड, आई रिपीट, द बाइंडिंग माइंड। फर्स्ट, शशि देशपांडे डिफाइंस फ्रीडम फॉर द इंडियन वुमेन विद इन इंडियन सोशल कल्चर वैल्यू सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। कमेंट। आई रिपीट द क्वेश्चन, शशि देशपांडे डिफाइंस फ्रीडम फॉर इंडियन वुमेन within the Indian social culture value system and institution. Discuss. Next, discuss the various themes present in the novel The Binding Mind. The various themes that are present in Binding Mind. Comment upon Shashi Deshpande views of marriage in The Binding Mind. Write a comprehensive note of Shashi Deshpande art of characterization. And the last, discuss the title The Binding Mind. अब इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस हैं, अगर I'm going to mention here तो आप लोगों को सर ये तो ज़्यादा खींच रहे हो यार, इतना मत करो प्लीज़, हम उसको कैसे फॉलोअप करेंगे। तो उसके लिए मैंने इंस्टा आईडी जो पीछे दी गई है @rahul classic classic राहुल, उसको फॉलो करना, वहाँ मैं सब अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट सर, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रोज। हमारे पास बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेगेसी है, मदर है, मिजरी है, सब बड़े सारे नाम है, नहीं बताऊँगा। ऑटोबायोग्राफी सर, हेलन केलर की डायरी एंट्री या गांधी जी के व्यूज, नेहरू और इंदिरा गांधी की क्या सोच थी उसको डिफाइन करता है, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शॉर्ट स्टोरी एंड प्रोज। नंबर 1, गिव अ समरी ऑफ डीएच लॉरेंस मॉर्निंग इन मैक्सिको। आई रिपीट, कह रहा है गिव अ समरी ऑफ डीएच लॉरेंस मॉर्निंग इन मैक्सिको। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द स्टाइलिस्ट्स, What are the stylish feature to description prose? Description prose में क्या होता है stylish feature? Write a critical evaluation of passage of H.G. Wells, The War of Words. The War of Words. What stylistic features exploratory prose do you think in Tagore's essay? The artist. Yes, you need to clear that. The artist. Tagore की storyline है, उसमें उसने क्या add on किया है? So ये तो first वाले से नहीं आया। हाँ। Next one. What do you understand by the non-fictional prose? Yes, the non-fictional prose, the art of letter writing with the reference of Nehru's letter to Indira Gandhi. Next, we are having, कहता है give characteristics of Mangal-lal and Vimla from the story The Other Woman by Dina Mehta. I love this storyline, The Other Woman. Honestly, I really want you guys to do this. Give character sketch of the Mangal-lal and Vimla from the story The Other Woman by Dina Mehta. Next, write a detailed note on a Dina Mehta prose style in The Other Woman. उसका prose style क्या था The Other Woman है, उसको mention करना, पूरा clear करना है। कहता है Jordan Wharton's mother is an experience of immigrant in Australia. Discuss. I repeat the question. कहता है Jordan Wharton's mother is an experience of an immigrant in Australia. Discuss. How is the story mother at one level about the individual mother and on the other level about relationship? Yeah, one side is sort of one individual mother and the other side is sort of relationship and terms. Next, what are Anna Frank's reason for writing a diary? वो क्यों लिखती थी यार, छोटी सी लड़की थी 10 or 11 years, why she write on diary? She don't have a real friend. अच्छा मैं बोलूँ तो। Come next, what are your views? I repeat, what are your views on Anna Frank as a writer and humanist with reference to her diary? Next, is the title Misery in accordance with the subtitle? Misery in accordance with the subtitle, उसको define करना है। Next, we are having, कहता है Aton Chalks the short story Misery has a subtitle Whom shall I tell my grief? To whom shall I tell my grief? हाँ, कोई तो या जिसको मैं बता पाऊँ क्या तकलीफ है। Discuss the significance of the two titles that are being read to each other. Comment on the prose style of Anton Chekhov with the special reference story Misery. चलो सर ये होगी शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रोज राइटिंग। सर लेगेसी का क्वेश्चन नहीं डाला, क्या वो आने के चांसेस नहीं है? नहीं डाला, इसका तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेगेसी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। Come to next, non-fictional prose. What does mean by non-fictional prose? क्या है, कैसे क्लियर करूँगा? How I'm going to justify it? How is biography different from history of fiction? How is biography different from the history and fiction? Next, what are the different techniques of the autobiographic writing? Autobiographic writing के different techniques के। Next,
व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी, सो उसी को लगे गांधी जी का व्यू पॉइंट आ जाएगा, उसको हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट, डिस्कस द डिफरेंस इन द टेक्निक ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी एंड अ ऑटोबायोग्राफी। टेक्निक राइटिंग अ बायोग्राफी एंड अ ऑटोबायोग्राफी, दोनों में डिफरेंस। Who were the important people who influenced the shape Gandhi thought? Give reasons with written. Who were the important people who influenced and shaped Gandhi's thought? Analyze the theme on seeing England for the first time by Jamaica Kincaid. Next one, Boswell's Life of Johnson is a piece of art. Comment. Write a critical appreciation on Margaret Lawrence, My Final Hour. I love this story, My Final Hour. Actually speech. Explain the theme of A Dissertation upon Roast Pig. A Dissertation upon Roast Pig. And the second last we are having, what are Anna Frank's reason for writing a diary, and what are your views of the Anna Frank as a writer, humanist and refer to a diary. Jump to next part. Write short note on the following. Says short notes हैं, हर पेपर शॉर्ट नोट्स एक डाउनलोड पे करते हैं, यहाँ भी है। पहला, figure speech used in prose and poetry with a suitable illustration. Write a short note on figure speech used in prose and poetry. Next, a historical perspectives of the English essays. I repeat, write a historical perspective of English essays. Next, we are having letter and privileges, difference between expository and narrative prose, distinguish between prose style and privileges from the prose form and suitable example, autobiography, essay writing, that's really important, essay writing, short story, Tagore's style in The Artist, comparison between narrative and descriptive prose. We have different kinds of descriptive writing, effective use of simile and metaphor, Morning in Mexico, and the last, Tagore's views on creative process. क्या अगर ये क्वेश्चंस कर लें, सीरियसली अगर क्या ये क्वेश्चंस कर लें, हम इस पेपर में 60 to 70 मार्क्स ले आएंगे, गारंटी। गाइस जस्ट फॉलो दीज क्वेश्चंस। किस तरह कोई दिक्कत आती है तो पीछे नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।